Good morning, everyone. Please give a huge round of applause for the vehicles, please. Good morning, everyone. I would like to bring your attention towards this side of the... Good morning, everyone, and a very warm welcome on behalf of Delhi Commission for Protection of Child Rights and Delhi State Industrial and Infrastructural Development Corporation. Thank you so much for joining us today for the launch event of Children Distress Response Helpline. DCPCR has been constituted under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. The Commission is responsible for monitoring the implementation of the rights of the children, conducting research, and inquiring into complaints and violations of the child rights. Its role is also to advise the government on policy matters on the issue of early childhood care and development, school education, protection of children from physical, mental, sexual abuse, child labor, early marriage, substance abuse, and trafficking. The vehicles that you saw here today set the core foundation of our distress response helpline. The vehicles were given to us by our project partner DSIIDC as part of their CSR initiative. For the past 50 years, DSIIDC has played a key role in propelling the industrial and infrastructural development in Delhi. The corporation, in addition to its service to Delhi's citizens, has always supported various social causes, such as setting up of night shelters in collaboration with Delhi State Urban Shelter Improvement Board. Another testament of their contribution is the reason that we are all present here today. It is a pleasure that today amongst us we have Shri Kailash Gahlot, Shri Satyendra Jain, Shri Vijay Kumar Dev, Honorable Ministers and Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Director, Women and Child Development, Dr. Rashmi Singh, for the event. Thank you, sir and ma'am, for gracing us with your presence. Please give a huge round of applause.
Shri Kailash Gahlot is the Cabinet Minister in the Government of Delhi. His portfolio includes women and child development, transport, law, administrative reforms, IT, and revenue. He has a long-standing commitment to public service as a philanthropist, educationist, and an entrepreneur for social change. He is widely known for his passion for human development issues, especially concerning the youth. Thank you, sir, for being here with us today. I would like to invite the students of the school to kindly felicitate Mr. Shri Kailash Gahlot, Honorable Minister. Please give a huge round of applause. We would also like to share that the paintings that you see that we are giving have been purchased from business being run by the students of Government Girls Senior Secondary School, Moti Nagar, as part of their Business Blasters program of Delhi government. Please give a huge round of applause. Shri Satyendra Kumar Jain is the Cabinet Minister in the Government of Delhi. His portfolio includes health and family welfare, industries, home, power, water, urban development, irrigation and flood control. He also serves as a chairperson of DSI-IDC. Honorable Minister joined active politics after participating in the Anna Hazare-led government anti-corruption movement of 2011. He's also been an active functionary of several social welfare organizations. Thank you, sir, for being here with us today. Shri Vijay Kumar Dev is the Chief Secretary of Government of N-City of Delhi. He has received multiple awards and medals for his service, some of which include President's Award for Best Electoral Practices, first time making the polling stations in Delhi disabled friendly, Gold Medal for electrifying the inaccessible remote villages on China border, and many others. Thank you, sir, for being here with us today. Please give him a huge round of applause. We also have among us Director, Women and Child Development, Ms. Rashmi Singh. Please give her a huge round of applause. She's always been very supportive to DCPCR in all our initiatives. We are also honored to have amongst us DSI-IDC Managing Director Shri Vivek Pandey and Executive Director Shri Aman Gupta, with whose support it would not have been possible to expand a helpline to include an on-field distress response team. Thank you, sirs, for being here with us today. Sir, please. Ladies and gentlemen, let's once again give a huge round of applause to all our dignitaries present here. Thank you, everyone. I would now like to invite Chief Secretary, Government of N-City of Delhi, Shri Vijay Kumar Dev, to share his thoughts with us today. Cabinet Ministers from Government of N-City of Delhi, Mr. Satyendra Jain, Mr. Kailash Gahlot, Chairperson DCPCR, Mr. Kundu, DSIDC MD, the officers of the DSIDC, officers from Women and Child Development Department, all the distinguished invitees, ladies and gentlemen. At the outset, let me convey my sincerest gratitude to DCPCR for organizing this event here today. DCPCR has been doing marvelous job on all aspects of protection of child rights in Delhi. Every child deserves a happy childhood.
every child also deserves an opportunity to lead a life which is dignified, which is free from violence, from exploitation, from discrimination, from deprivation, and from neglect. And all these steps which have been taken by DCPCR in Delhi are path-breaking. This emergency response system that has been put in place by DCPCR is a very important milestone in the journey of DCPCR for protection of child rights in Delhi. The fact that 250,000 calls have been handled in a year shows the enormity of this response system. And today, this expansion which has been made in terms of physically reaching out to children in distress in all parts of Delhi through a system which would be efficient, which would ensure that there is no wastage of golden hours in coming to the aid of the children in distress. I think this is something which deserves accolades, and my special kudos to DCPCR and DSIDC, in whose collaboration this has been done. My best wishes to DCPCR in all its endeavors. Government of NCT of Delhi will keep extending its fullest cooperation and support to DCPCR in all its endeavors. Let us all resolve on this special day that we will ensure that every child in Delhi gets a childhood which is happy, which is healthy, and which is free from all the violations of child rights. Thank you very much. Thank you so much, sir. It is indeed with your support and guidance that we have been able to do our bit in protecting and empowering the children of Delhi. I would now like to invite Shri Satyendra Jain, Honorable Minister, to share his thoughts with us. मंच पर उपस्थित मेरे साथी कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी, DSIDC के MD, सभी अधिकारीगण, DCPCR के चेयरमैन कुंडू जी, सभी साथियों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आज बड़ी खुशी का विषय है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन स्टार्ट की गई थी कुछ समय पहले DCPCR के द्वारा, तो हेल्पलाइन तो स्टार्ट हो गई थी, बट बच्चों को इमीडिएट हेल्प देने के लिए व्हीकल्स नहीं थे। तो इमीडिएट हेल्प भी दी जा सकती है, रेस्क्यू भी किया जा सकता है। तो उसके लिए DSIDC ने 5 गाड़ियां और 5 मोटरसाइकिल मुहैया कराई हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी बच्चा अगर डिस्ट्रेस में होगा तो DCPCR की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर उसको हेल्प पहुंचाई जा सकेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके लिए कुंडू जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं चाहूँगा कि कोई भी एक भी बच्चा किसी भी डिस्ट्रेस में ना हो, और अगर हो तो ये लोग उसकी हेल्प कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. It is under your chairmanship of DSIDC that we have a dedicated government emergency response now. We would now like to invite Honorable Minister Shri Kailash Gahlot to address the gathering. सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई सिंदर जैन जी, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी, DCPCR के चेयरमैन अनुराग कुंडू जी, डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, मेरे ख्याल से आज बहुत एक अहम दिन है कि पहली बार एक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हमारे पास गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आई हैं, ताकि अगर कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस में है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें, किसी वॉलंटियर को ढूंढें, कैसे पहुँचें। और उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी सिंदर जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि DSIDC के द्वारा ये व्हीकल्स उन्होंने CSR एक्टिविटी में टेकअप किए। मैं उनसे ये भी आश्वासन ले रहा हूँ कि आगे इसी प्रकार से CSR और फंड हमें देते रहें,
विवेक जी ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये शुरुआत है। जैसा कि अनुराग कुंडू जी बता रहे थे, लगभग 2.5 लाख कॉल्स इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। तो जैन साहब के आने से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब, रश्मि जी, विवेक जी, हम बात कर रहे थे कि CSR फंड अवेलेबल कराया DSIDC ने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक इस चीज़ के लिए हमें CSR फंड की कभी आगे वेट करनी चाहिए। आई थिंक वेरी सून वी विल मूव अ प्रपोजल कि हर एक सब डिवीज़न में हमारे पास एक मोबाइल यूनिट रहे, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे गाड़ी है, चाहे और कोई चीज़। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हम काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम इंश्योर करेंगे कि हर एक सब डिवीज़न में एक मोबाइल जो है यूनिट वो ज़रूर रहे, ताकि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की अगर कोई डिस्ट्रेस के दौरान अगर कोई भी उसको मदद चाहिए, तो दिल्ली सरकार जो है उस बच्चे तक, माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम उस बच्चे तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर दोबारा पूरी DCPCR के तमाम उन अधिकारियों का भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जो मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से WCD डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस तरह से बढ़िया काम कर रहे हैं। जय हिंद। Thank you so much, sir, and we are very excited to take the things forward that you had mentioned today. I would now like to invite DSIDC's Managing Director, Shri Vivek Pandey, to share his thoughts with us. Please give him a huge round of applause. थैंक यू। दिल्ली के मंत्री, आदरणीय मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, कैलाश सर, विजय देव सर, DCPCR के अध्यक्ष कुंडू जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जीवन में बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है जहाँ पे आप जो कुछ करना चाहें सरकार और भगवान उसके लिए आपको मौका दे। तो ये मैं DCPCR मेरे सामने बना था। जैसा कि सर ने कहा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड की इशूज़ बहुत बड़ी समस्या है इस देश की। इन समस्याओं का समाधान एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके अगर सभी लोग करें तो निश्चित रूप से एक चाइल्ड जो डिस्ट्रेस में है उसकी बहुत सहायता की जा सकती है। ये एक छोटा सा प्रयास है DSIDC की तरफ से। ये 5 वैन देना और ये 5 बाइक देना, ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं समझता। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी जिसको DSIDC ने प्रयास किया है चैनलाइज करने का। न केवल हमने इस बार CSR के अंतर्गत DCPCR को ये दिया है, बल्कि हमने GB पंत को, NSUT को नए टॉयलेट बनाने के लिए कई एक्टिविटीज़ किया है। उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया है जहाँ पे वास्तव में इनकी ज़रूरत है। कई जगहों पे मज़दूरों के लिए टॉयलेट नहीं होते, लोग परेशान होते हैं। कई जगहों पे कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुछ करना चाहते हैं, सरकारी सिस्टम में बहुत टाइम लगता है, तो हमने उनको ख़रीद के दिया। इसीलिए यहाँ पे भी हमने गाड़ियाँ खरीद के दिया, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट में हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ प्रोसीजरल डिले बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इस वैन ने और अगर इस बाइक ने किसी भी बच्चे की कोई भी हेल्प की, उस बच्चे की जो दुआ निकलेगी हम सभी को लगेगी। मेरा पूरा